Hello everyone, this is class 7 maths video of chapter number 10 and today we will do question number 2. So question number 2 is on what sum of money does the simple interest for 10 years at rate 5% become 1600? Getting the statement is on what sum of money means कितनी मनी होगी कितना कितने पैसे होंगे एक्चुअल में जिसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है 10 ईयर्स में जिसमें रेट 5% लग रही है 1600 मिलता है मींस जो इंटरेस्ट है वो 1600 है रेट इज़ 5% टाइम इज़ 10 ईयर बट ही इज़ आस्किंग कि कितने पैसे एक्चुअली उसने पर्सन ने डिपॉजिट करवाए होंगे कि उसको इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया मीन वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल हेयर. So I have written here principal we have to find, rate is 5%, time 10 years, simple interest is 1600. Nothing we have to do, just apply the simple formula that we have learned and we have applied in the previous questions, that simple interest is equals to P into R into T over 100. Now put the values. Simple interest is 1600 rupees. Put the value. P, keep P as it is, and R is 5. T is 10 over 100. 0 will be cancelled. 5 ones are 5, 5 twos are 10. 1600 is equal to P over 2. Take 2 toward another side. It will go, as it's in division, so it will go in multiplication. It becomes 1600 into 2 is equal to P. 3200 rupees. That is the required answer. Next is question number 3. Find the time in which rupees 2000 will amount to rupees 2330 at 11% PA. Means we have to find time here. एंड ही सेड कि स्टेटमेंट इज़ कि टाइम फाइंड करो कि कितने टाइम में इतने रुपीज़ जो हैं इतनी अमाउंट बन जाए. अमाउंट मीन्स अमाउंट क्या होता है हमारे पास, अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. मीन्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है वो हमें गिवन है, दैट इज़ 2330 2330 राइट. ही सेड कि अगर प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, रेट इतना है, तो हमने टाइम फाइंड करना है. वेरी सिंपल बेटा. सी व्हाट टू डू. फर्स्टली फ्रॉम दिस सम वी कैन फाइंड द गिवन थिंग्स. फ्रॉम द गिवन थिंग्स वी कैन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. हाउ वी कैन फाइंड, वी नो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट इज गिवन टू अस, प्रिंसिपल इज गिवन टू अस, so we can find simple interest. Put the values. I can write here. Put the values here. Amount is 2330. Principal is 2000. Write simple interest as it is. Take this 2000 to another side and it will get subtracted from amount is equal to simple. After subtraction you will get simple interest is equals to, यहाँ लिख रही हूँ आप थोड़ा अच्छे से लिखना, you will get 330 rupees after subtraction. Now we can apply the formula. Simple interest is equals to P into R into T over 100. Simple interest that we have found, that is 330 rupees. Principal is 2000 rupees. Rate 11. Time we have to find 100 as it is. Cancel these two zeros with these two zeros, and when you will multiply 11 twos are 22, you will get this zero will come with it into T. इसको multiply करने के बाद you will get 220, and now both are in multiply, right? We have to find the value of T ना, so we will keep it into the अनदर साइड, राइट. यहाँ पे रखेंगे इसको एंड इसको दूसरी साइड लेके जाओगे, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सो इट विल गो इन द डिवीज़न.
rupees will be cancelled, 0 will be cancelled. Now with the table of 11, 11 twos are 22, 11 threes are 33. You will get 3 over 2 years. This can be your answer. If you want to write it into the mixed fraction, you can write it by dividing with 2, and you will get 2 ones are 2 plus 1 3, 3 over 2. Yeah, you will get this answer. Thank you, beta.